Hello students, welcome to Gitishree study zone. So पिलामाने आमे आजी +2 सेकेंड ईयर रो मैथमेटिक्स सिलेबस विषय रे डिस्कशन करबा. ओके, सो तुम्हारा सिलेबस रे टोटल यूनिट 5 अछि. यूनिट 5 जाए तुम्हारा सिलेबस रे अछि. फर्स्ट तुम्हारा यूनिट 1 रे अछि रिलेशंस एंड फंक्शंस. सो एटा हेउची तुम्हारा यूनिट 1. और से यूनिट 1 भितरे तुम्हारा तीनटा चैप्टर अछि. गोटे चैप्टर होची रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड चैप्टर 2 होची इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड चैप्टर 3 इज लीनियर प्रोग्रामिंग. हैला तापरे यूनिट 3 रे अछि तुम्हारा अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी. सेथिरे भी तुम्हारा तीनटा चैप्टर अछि एंड फर्स्ट चैप्टर होची मैट्रिक्स, सेकंड चैप्टर होची डिटरमिनेंट्स एंड थर्ड चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी. तापरे यूनिट 3 की जिबा. यूनिट 3 रे तुम्हारा दीटा चैप्टर अछि. आ यूनिट 3 होची डिफरेंशियल कैलकुलस. हैला तो ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस से चैप्टर 1 रे अछि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड चैप्टर 2 इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड चैप्टर 4 होची तुमरा इंटीग्रल कैलकुलस. सो इंटीग्रल कैलकुलस रे मध्य तुमरा तीनोटी चैप्टर रहिबो एंड फर्स्ट चैप्टर इज integrals, second chapter is applications of the integrals and third chapter is differential equation. एंड फाइनली यूनिट 5 को आमे जिवा. यूनिट 5 रे तमरो वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री अछि. सो एठी तमरा दीटा चैप्टर तुमे पाइबो. फर्स्ट होची वेक्टर्स एंड चैप्टर 2 होची 3 डायमेंशनल जियोमेट्री. सो पिला माने एठी जदि मु तुमको टॉपिक्स और मार्क्स विषय रे कहबी तमरा एग्जाम रे रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग रो 20 मार्क्स रो क्वेश्चन आसे. माने एठी यूनिट 1 रो तमरा 20 मार्क्स रो क्वेश्चन आसे, यूनिट 2 रो भी 20 मार्क्स रो क्वेश्चन आसे एंड यूनिट 3 जो रहला तमरा डिफरेंशियल कैलकुलस रो भी 20 मार्क्स रो क्वेश्चन आसे एंड यूनिट 4 जो इंटीग्रल कैलकुलस भी सेथिर 20 मार्क्स रो क्वेश्चन आसे एंड फाइनली यूनिट 5 वेक्टर 3D ज्योमेट्री भी 20 मार्क्स रो क्वेश्चन आसे. तो हमरा रहिला पांचटा यूनिट, से पांचटा यूनिट रो हमरा 20 मार्क्स रो जो क्वेश्चन आसे टोटल तमरा 100 हे गला. सो मु भाबुची तुमरा सिलेबस विषय आउ किछि डाउट्स नथिबो. आउ जहार डाउट्स थिबो कमेंट सेक्शन रे कमेंट कले म आउ थरे तुमरा सिलेबस विषय रे डिस्कशन कर देबी. ओके, decision variable. So decision variable means maximum profit or it is called as objective function. decision variable को मध्य हमें objective function बोली जानि थाओ. ଆଉ LPP रे तुमरो सबठारु इम्पोर्टेंट जिंस होची सेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ओके, सो डिसीजन वेरिएबल कोन ना पिला माने जेते बेले जणे जे कोनोसी बिजनेस स्टार्ट करंती तो से सब बेले भाबंती जे मोर जेमती मैक्सिमम प्रॉफिट हबो. केही केबे भाबंती जे लॉस रे पडिबो बोली. हमें समस्त सब बेले भाबंती आमे बिजनेस स्टार्ट करबा पूर्व हमर जेमती मैक्सिमम प्रॉफिट हो ए बिजनेस रे. सो जदि से मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए एवं ताकर सबतक जिनस को गोटे फंक्शन आकार रे एलपीपी करदेबे एवं से एलपीपी को यूज करी तांकर केते प्रॉफिट हो से जानि जिवे ताहले से अकॉर्डिंग से काम करबे. जदि से अकॉर्डिंग काम करबे ताहले तांकर प्रॉफिट ता मैक्सिमम आसे जिवो. ओके, तो एठी गोटे एग्जांपल रे हम बुझिबा. सपोज द प्राइस ऑफ वन पेंसिल इज 10 रुपीज and the price of x pencil is kete habo 10 into x 10x rupees and the price of one pen is 10 rupees and the price of y pen is 20 into y je 20y rupees. आको आमे गोटे फंक्शन बा इक्वेशन रे लेखिबा. केमिति लेखिबा ना मैक्सिमम प्रॉफिट हमरे केति की हबो आको सॉल्व कले आमे पाइ जिबा हमर मैक्सिमम प्रॉफिट केते हबो. तो मैक्सिमाइज z is equals to the price of x pencil 10x and the price of y pencil is 10y. एटा को आमे गोटे इक्वेशन रे कन्वर्ट कर देले एवं ताको सॉल्व करबा जदी
ताहले आमे जानि पारबा जे हमर मैक्सिमम प्रॉफिट केते हेबो बुझि परलो linear programming problem so linear programming problem means we have to do optimization ऑप्टिमाइजेशन कौन आमको ऑप्टिमाइजेशन करिया पड़िबो maximum or minimum of a function of several variables so several variables of function रो आमको ऑप्टिमाइज करिया पड़िबो either maximization or minimization and certain conditions of these variables in form of inequalities. So formation of linear programming problems that is LPP. So formation of LPP has three types. First to formulate the objective function and the objective function can be either for maximization or for minimization ମୁଁ ତୁମକୁ या ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ एग्जांपल्स ଦେଇଥିଲି ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन या डिसीजन वेरिएबल्स भितरे जे जणे तार पूरा फंक्शन को एलपीपी करी जदि से जानि परिबो जे तार मैक्सिमम प्रॉफिट केते हेबो ताले सेटा को आमे कहवा ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू हेउची constraints or limitation so constraints कौन who is the solution of linear programming problem to be obtained and the step is to identify the constraints ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା ତମେ ବେଟର ବୁଝିପାରିବ ଦେଖ ଏଠି କନଷ୍ଟ୍ରେନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ସପୋଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ଏମ୍ ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଥାଏ ସୋ ସେଇ ଏମ୍ को ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ପେସେନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ କନଷ୍ଟ୍ରେନ୍ସ ଆସିବ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ ଏବଂ ତାକୁ ବି ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେଉଛି କନଷ୍ଟ୍ରେନ୍ସ and step 3 होची non-negative restrictions. So the decision variables cannot be negative. Thus, x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0. So decision variables take a negative हेबोनी. तार mean होची non-negative restrictions. General linear programming problem is of the form. So a form होची LPP रा general form. Optimize कौन maximize or minimize. So z is equals to c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3 plus plus cn xn. तापर पढ़िबा subject 2 एठी subject 2 कौन constraints. So constraints होची a11 x1 plus a12 x2 plus up to a1n xn less than equals to or greater than equals to b1. Then a21 x1 plus a22 x2 up to a2n xn less than equals to or greater than equals to b2. up to ए सब गुड़ाक होची am1 x1 plus am2 x2 up to amn xn and less than equals to or greater than equals to bn. And finally the non-negative restriction जोटा the decision variables cannot be negative. एठी decision variables केबे negative हेबो नहीं. So x1 x2 x3 up to xn greater than equals to 0. Types of linear programming problems. So linear programming problems कितने types रा? Linear programming problems has 4 types. कौन? Manufacturing problem, diet problem, allocation problem and transportation problem. ये जो manufacturing problem से जिनसटा कौन ना? Manufacture माने जे manufacture करे तैयारी करे सपोज आम जड़े कार्पेंटर को नबा काठ व्यवसायी एग्जांपल ये नबा जड़े ऑर्डर देले मते दुईटी चेयर एवं दुईटी टेबल दरकार सपोज सो ये कार्पेंटर जनक कौन करेंगे ना से सपोज दुईटी चेयर दाम हो 50,000 एंड दुईटी टेबल रो दाम हो सपोज 20,000 20,000 ओके
ताहले से भाबिबे जे से जिनस को एमिति भाବରେ तैयारी करिवे ठीक ठीक परिमाण रे काठ आनिबे ठीक टाइम परिमाण रे कलर्स आनिबे तो जेमिति तांकर लॉस हेबनी एठी मैक्सिमम प्रॉफिट हबो ओके आ एगुडा तो बेसी हमको देखा जाए पिला माने कंपनी इंडस्ट्री मानकर एगुडा को सब देखिया को मिले कोटा मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम तापर डाइट प्रॉब्लम डाइट तो आमर दैनंदिन जीवन मध्य समस्त कहते आम डाइट मेंटेन करवा डाइट कौन डाइट हूँ आम बॉडी को ठीक परिमाण रे प्रोटीन दरकार विटामिन दरकार कार्बोहाइड्रेट दरकार स्टार्च दरकार ताहले जदि आम बॉडी को एते दरकार ताहले ए सब आम बॉडी आनिबो कोठू आम जिते खाद्य खाइबा से खाद्य रु आम बॉडी को प्रोटीन जीव विटामिन जीव कार्बोहाइड्रेट जीव सपोज एग कथा कहूँ एग एग्जांपल ये अंडार एग्जांपल मु नौची अंडार आमर हाई क्वालिटी प्रोटीन अच्छी सेलेनियम अच्छी फॉस्फोरस अच्छी एंड विटामिन B12 अच्छी ये मल्टीपल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी अच्छी से सपोज गोटे अंडार दाम 20 टंका एवं आम घरे 5 जन मेंबर अच्छा जदि गोटे अंडार दाम 20 टंका एवं आम घरे 5 जन मेंबर अच्छा आम 5टा अंडा आनबा तो आम 100 टंका खर्च करवा आम पाखरे 100 टंका नाही सेथिपाई आम अंडा खाई परिबानी आम बॉडी को प्रोटीन विटामिन जाई परिबनी ताले आम कौन करबा आमे मार्केट रू एमिति वेजिटेबल्स हो कि एमिति खाद्य आनिबा जो थिरे आमे गोटे शेड्यूल तैयारी करबा एवं से शेड्यूल रे आमर प्रोटीन विटामिन्स थिबा ठीक ठीक परिमाण रे एवं लो कॉस्ट रे सो आमे एमिति करबा जेमिति कि आमर कॉस्ट भी लो हबो एवं आम बॉडी को कण प्रोटीन विटामिन्स भी मिल जिवो ओके से आम कौन करवा ना एथिरे हमको पूरा डाएटा मिल जिवो एवं खर्च भी कम हेबो बुझि पालो तापर होची एलोकेशन प्रॉब्लम एंड एलोकेशन प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रॉब्लम पिला माने सपोज एठी 5 जन काम करिया पई आसीचंती सो एठी मो पाखक जदि 5 जन काम करिया पई आछंती ताहले मो से 5 जनक भितर कामटा को एलोकेट कर देबी कामटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देबी 5 जनक भितर जे ए पर्सन कामटा को 2 ରୁ 3ଟା जाय करबो बी पर्सन 3टा ରୁ 4ଟା जाय करबो तो एमिति भाबरे मो कामटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देबी एलोकेट कर देबी तो एमिति कले कोन हबो ना जेमिति मोर खर्च कम हेबो एवं काम भी ठीक टाइम रे हे जिवो बुझि पालो पिला माने तापर फाइनल होची ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अच्छा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कौन देख सपोज एप्पल एप्पल बेसी प्रोडक्शन होची चाइना रे ओके ताले चाइना रो एप्पल ट्रांसपोर्ट हेबो केमिते ट्रांसपोर्ट हेबो ना जे ट्रांसपोर्ट करबो से सब बेले कहबो जे जिनसटा एमिति ट्रांसपोर्ट हो जेमिति मोर किछि खर्च कम हेबो एवं शॉर्टकट वे रे भी ट्रांसपोर्ट हेबो